Hello and welcome to our show. Today's guest for the show is a poet. Nearly 2.4 million people have watched her side, and she's a very lovely and amazing personality. So, without wasting any time, let's get to know about her journey from the persona herself, Miss Munmun Tiwari. And as always, before welcoming our poet, let's say Irshaad. Hello, Munmun. How are you doing? Hi, I'm doing great. How are you? I'm doing good actually. Thank you Uh, so much for coming. It's been so late. मतलब काफी रात हो गया. Like we are connecting, but thank you so much for coming and giving me time actually. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for this thing. Yeah, like it's not that big, but yeah, hopefully this will be big. And like this is very personal agenda of mine to talk with co-founders. That's why I'm connecting with co-founders and letting people know what I am talking to Hmm. you, what I am learning. मैं क्या सीख रहा हूँ? I just want to learn, like want them to learn from this thing. So that's why. That's Right. the whole agenda of this. And I want to build a community around this co-founders and businesses, So that's why this platform is here. So thank you so much for coming and giving time to the show. Thank you so much. Thank you so much for calling. Honestly, thank you so much. Okay, so let's get started with this conversation. So Munmun Tiwari is your pen name, right? So Pen name, घर का yeah, नाम. okay. घर Because का it actually was just my घर का नाम. तो घर के नाम को आपने आपका पेन पेन नेम बना दिया. Yes. ओके. तो अगर मैं पूछूं मुनमुन तिवारी कौन है, बिकॉज लाइक while talking to you you said that Priya Tiwari is a different persona and मुनमुन तिवारी is a different persona and इरशाद मुनमुन तिवारी के साथ ज्यादा सिनर्जी में है. तो who is मुनमुन तिवारी अगर मैं बताऊं तो? Okay. Actually, Priya isn't more Irshaad. Okay. Munmun is, yeah, because Munmun is an artist Yes. who makes sure that most of the time she doesn't like Irshaad and Munmun को अलग रख सके. हाँ जी. Because Munmun itself wants to be a brand. Honestly speaking, as a Okay. poet, she wants to be a brand, Okay. and Irshad is another brand. Okay. So there's a whole conflict in my mind which I'm trying to make a base out of. So Priya, I'll tell Priya is a commerce graduate Okay. from KC Das Commerce College, Okay. who was also the assistant general secretary in her college life for 2014-15. जी. Actually पता है क्या होता है when you're young, I'll tell about myself. When you're young, you really want to try new things and stuff. राइट. But अब हर बार क्या होता है ना, कैसे शुरू करें, बिल्कुल. सबका है. क्या करें, जी. how, मतलब if you'll talk to 2014 का Priya, she didn't know about poetry and stuff, open mic, यस. but she always wanted to be a social worker. ओके. But then again तब भी ये क्वेश्चन था कि कैसे करें, मतलब कहाँ जाए, किसको मिले. I really didn't have anybody in my circle who was into this thing. ओके. Then after my graduation, I did yoga and stuff. So I attended this thing, this open mic in Mocha. I still remember that day. And I met this friend of mine. I saw this friend of mine who is now a very close person in my life. But that time मैंने just देखा उसे. जी. And I was like, ये तो फैंसी का लड़का है, ये कर रहा है, मैं भी कर सकता है. That was my first instinct कि dude वो जो कर रहा है I can do that. So I used to do that thing in college, anchoring and stuff. So he was emceeing a stand-up show. I'm like, huh, ये तो like not to sound proud, but yeah, I was like, I can do that. हम भी कर लेंगे. So that, हाँ, मतलब that was the thing, and I was like, ओके. हाँ करना है. जी. So that's how I get connected with poetry, यस. and that person only told me कि you have too much energy in yourself. So try to channelize it. ओके. And जब आपको कोई ऐसा ज्ञान देता है, you ask that person ना कैसे, कैसे? how राइट. to channelize. बिल्कुल. Don't like practical examples दे दो
I'll be much more satisfied than theoretical. वो तो book में भी मिल जाता है. जी So then that person gave me a reference name of an NGO, and I joined that NGO. जी And I just that's how my social work thing started. Poetry तो still दूर दराज तक शुरू नहीं हुआ था. जी How poetry started was so I talk a lot. You can see that I talk a lot. यस You can hear anybody can who knows me. I have like verbal diarrhea. I talk a lot. So when I started performing, हाँ हाँ मैं खुद का नहीं लिखती थी. I used to recite other people's stuff. ओके And वो भी ironically उन लड़कियों का those used to write lot good. मतलब बहुत अच्छा लिखते थे. जी But they were not allowed to go out and perform. ओके So I used to be that voice कि चलो मैं मेरे को तो लिखना नहीं हुआ तो I'll perform. हाँ So 2-3 बार I perform like that. But वो मतलब एक रिस्पेक्ट होता है ना एज एन आर्टिस्ट. जी अब वो नहीं था. मतलब ठीक है ये आइए कुछ भी बोल के जाइए वाला स्टफ था. ओके So I remember at coffee house, I wrote my first piece and I recited it to my father. Then he heard and he's into writing शायरी and stuff. He has this background. He loves that. तो मैंने उनको सुनाया and he's like, it's good. ओके He was like kind of proud. So he's like ये तो अच्छा है. So I'm like ठीक है पापा मुझे सुनाएगा. So I recited that thing at a coffee house and मतलब क्या I was like my whole group went to support me there. But I was not given the chance to perform. Like होता है ना कि they like ये तो कुछ भी बोल के जाएगी तो वो था ही नहीं. जी So at the end I was so frustrated and I'm like मैं जा रहा है. तो नहीं they were like no perform. So I performed towards the end, like not the last one but towards the end, and I actually got a standing ovation. And the host for that day was crying, ओके and that was my achievement. Honestly speaking, even if today you ask me which is my favorite performance, it will be that ओके because that was the day like the 360 change of outlook towards me happened ओके in the same circle who like वैसा था. And then I started writing more. तब तक इरशाद पिक्चर में नहीं था. So I started writing more. And then that IIT Yakut happened. And thankfully my video got viral, which now has 2.4 million views. So ग्रेट नंबर that's how like I was much more respected as an artist. And but honestly I don't like that thing because जिस दिन मुझे 10,000 व्यूज आए थे ना आई वॉज हैप्पी हाँ कि चलो मेरे को 10,000 लोगों ने देखा. दैट वाज द एपिटम ऑफ हैप्पीनेस आई हैड. उसके बाद आई वाज लाइक ठीक है जी मतलब उसके बाद ठीक है 10,000 देख ली उतने तो गुवाहाटी में होंगे लोग बाकी तो चलो इट्स ओके. हाँ बट आई मस्ट टेल यू दैट आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन IIT गुवाहाटी में बोथ एज योगा के ग्रुप एंड एज पोइट्री के लाइक जो उनका कल्चरल ग्रुप है. जी आई एम फ्रेंड्स विद देम लाइक दो टेन्यूर से जो लिट्सॉक के सेक्रेटरी रहे हैं दे आर गुड फ्रेंड्स. एंड सुदीप इफ यू लिसन टू देम ना दे आर सो गुड. दे आर सो गुड. मैं लिटरेचर में मैं मजाक नहीं कर रही हूँ. लाइक one of this girl, her name is Manisha Srivastav. She has written a piece on Abhimanyu. And if you listen to that, na, God, goosebumps. And she performed it in Jashn-e Ekta. Jashn-e Ekta is in Delhi. It's a uh, big event. Galib हाँ हाँ के उधर होता है. So she performed there, represented like her college or herself. It was very good. So that moment after 10K views, na, I was kind of disappointed in how the audience approaches art. ओके Okay, I'm happy. Personally, I'm happy. ठीक है कि I got viral and stuff. But when you understand art ना तो कुछ कुछ चीजें होती है ना जो deserve करती है. जी जी So वो थोड़ा सा मतलब disappointment. Again, Priya was a bit disappointed, but Munmun was happy. या That's how I differentiate. ओके Then the thing I started with was poetry social. And within 2 years, the event stopped happening around in Guwahati. ओके So 2017, 18, 18 के एंड तक ना इवेंट्स होना बंद हो गए थे. एंड कुछ और ग्रुप्स फॉर्म हुए
बट उनमें जो वो पर्सनल टच था ना वो नहीं था, मतलब इट वॉज वेरी मच okay, something is happening, the host is not interacting that, मतलब they try to, but एक माइक पे जो बंदा होता है ना वो माइक तक ही अगर रहे ना तो you don't feel connected, Yes, मतलब right. I didn't feel connected. No one to, yes. So in October 2019, हाँ. at anything, like I was thinking कि ना let me have a मतलब have a बैठक session. जी. I hope like 10 लोग तो आ ही जाएंगे. हाँ. I was hoping कि 10 people will come. And I didn't promote, मतलब तब promote कैसे करना है, कैसे किसी को बुलाना है वो नहीं था. As a personal contact से I tried कि I'll bring 10 people. हाँ. मतलब व्हाट्सएप And स्टेटस before लगा दिया या कुछ भी. हाँ व्हाट्सएप स्टेटस डाल दिया. ग्रुप था हमारा पोइट्री सोशल का, तो हाँ. मैंने ऐसे डाल दिया. तब तक इरशाद का पेज भी नहीं था. ठीक है. सो आई डिड दैट एंड पता है द how I motivated myself, or how people around or things around motivated was, इरशाद का नाम is given by someone else. ठीक है. इरशाद का जो बेसिक बायो है that is given by someone else. हम्म. इरशाद का logo is by someone else, and that artist is very big but she just did out of love. I don't know, हम तो personally जानते भी नहीं है. She just thought कि she just told me कि दी आपके आइडिया में मुझे अच्छा लग रहा है, I would like to do it for free. एंड तब तो पैसे थे भी नहीं, तो लाइक आई थिंक दैट्स हाउ कम्युनिटी बिल्ड्स, पीपल हेल्प ईच अदर. एंड इरशाद का नाम जिसने दिया, ही इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू मी. आई गॉट आई कॉल हिम माई ब्रदर बिकॉज ऑफ पोइट्री वी मेट. एंड जिसने बायो दिया, शी इज द, एंड यू कैन कनेक्ट टू हर एज वेल. हर नेम इज जाफिन अख्तर. She is the founder and proprietor of SLAP, Spread Love and Peace. I was part of it. They work in sexual and reproductive health, ओके. ओके. based out of Balipara, ओके. Tejpur, and doing great work. ओके. So she just helped me out with the content, ओके. and I called the event, and 18 people came, ठीक है. and that was the day I was like, okay, अच्छा हुआ. Like राइट. no हाँ. money, because no sound system required, हम्म. no money was involved, यस. एंड यू आर नॉट and इवन होपिंग 10 पीपल. वहां पे yeah, 18 लोग आ yeah, गए. यस. yeah. And ना best part about इरशाद, I proudly can say is यहाँ पे परफॉर्मर से ज्यादा ऑडियंस मिलेंगे आपको. तब तो सही है. That's the thing. If you want to sustain or grow as an artist, of course आपको अपने जैसे लोग भी चाहिए, but आपको सुनने वाले चाहिए. सुनने वाले या चाहिए. इफ यू आर अ पेंटर, यू आपको ऑडियंस वैसी चाहिए. सिंगर हो तो सुनने वाले चाहिए. सो दैट्स हाउ द आर्ट गेट रिस्पेक्टेड, मतलब एटलीस्ट सर्वाइव कर पाता है ना. जी. सो दैट डे एज वेल 6-7 people were listeners, just like नहीं नहीं हमें सुनना है. ओके. So that's how it started. And then there we did the first open mic in Jorhat. ओके. यस. That was covered by news channel as well. Open house cafe में हुआ था. It like 100 people came. ओके. 100 people, and the cafe owner, like normally क्या होता है, cafe अपना business करता है. The cafe owners just closed the business. ओके. उसने सर्विंग नहीं किया कुछ भी उस दिन. उसने उस शो को इतना अच्छे से रिस्पेक्ट किया, which was very heart touching. And again it went very well because 100 का audience आना is a big बिग thing, नंबर. a यस. very big. हाँ. Yeah, performers उतने नहीं थे. Again performers उतने नहीं थे. और Performers was like ये 30. नए स्टेज में, मतलब नए स्टेज में इरशाद जब नए स्टेज में था उसी टाइम 100 पीपल कमिंग. Yeah, second event of Irshaad. ओहो. अरे. तब तो लाइक इट्स अ Yes. ग्रेट नंबर. Yeah, and then again it was not, मतलब we didn't involve financial stuff. हम्म. That's ओके. like again लाइक वापस कोई फेसबुक financially. प्रमोशन वगैरह नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब खुद नहीं के नहीं हाँ नहीं सक्सेस. नहीं हाँ नहीं, इरशाद का पोस्ट आज तक हमने ना बूस्ट नहीं करा है. जो भी ओके. पेज की स्ट्रेंथ है, जो भी अभी लाइक लास्ट इवेंट में हमने एक पोस्ट प्रमोशन किया था, बट बिकॉज ऑफ माई स्मार्टनेस आई डोंट नो हाउ टू प्रॉपरली डू दैट. सो हमारा इवेंट जैसे कल है, सो समबडी टोल्ड मी संडे को है तो यू शुड बूस्ट इट ऑन फ्राइडे. यस.
बट दैट पर्सन फॉरगॉट टू टेल मी कि फ्राइडे के लिए वो 24 घंटे उसका अप्रूवल का वेट करना पड़ता है. हाँ, यस, सो 24 आवर्स तक तो अप्रूवल ही नहीं आया था. देन आई वाज लाइक उसको बंद करो. जब अप्रूवल आया तो नेक्स्ट डे इवेंट ही था. हाँ, मैंने बोला उसको बंद करो. सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग एंड इट डिडंट गो वेल. इवेंट वेंट रियली वेल, बट दैट तो हमने आज तक बूस्टिंग किया ही नहीं है. ओके. सो बूस्टिंग तो डिड गॉट रियली वेल, बट मतलब इवेंट वाज फाइन. हाँ, मैंने हाँ, देखा इवेंट तो काफी सही था. यस. that's good. Yeah, it went well. यस. हाँ, तो जोरहाट was the first event. हमने ज़्यादा कुछ वैसे नहीं किया. हमने जस्ट एक कैफे से बात की. कैफे के लिए भी फर्स्ट टाइम था. उससे बहुत पब्लिसिटी मिली बिकॉज न्यूज़ कवरेज मिल गया. हाँ. A lot of people came. वो कैफे फुल्ली तरह ओपन भी नहीं हुआ था. एंड दैट्स हाउ. मतलब एक्सपेंसेस जो पर्सनल लगा वो अलग चीज़ है, बट इवेंट वाज या मैनेज्ड. नो मैनेज. एक्सपेंसेस बियर्ड. राइट. एंड ओके, अक्टूबर में ये हुआ. दिसंबर में जोरहाट हुआ. हाँ. And in February, yeah, in February there was this big event called Sunday Shook. ओके. It was like Momo Fest. वो one time ही हुआ. Um, that was the event. Abhilash performed in the competition of Poets of Irshaad, and he won second prize. ओके. जी. And that's how we met. हाँ, हाँ. तो That's ये how we met. And तो ये ऑर्गेनाइज जोरहाट में ही हुआ था, लाइक, और नहीं नहीं, it was in Guwahati, Khanapara Veterinary Field. It was a very big festival. Kabir Cafe came, performed. Few stand-up comedians came. It was like a big fest. हाँ, हाँ, मेला जैसे 3 दिन का फेस्टिवल हुआ था. हाँ. ओके. सो उसी इवेंट में हाउ टू यूज फेस्ट टू मोनेटाइज मोनेटाइज. ऑल्सो मैंने सीखा. सीखा. एंड आई मेट अ लॉट ऑफ लाइक इवेंट सर्किट के लोगों से. मैं बहुतों से मिली एंड बहुत कुछ सीखा. ओके. तो हमने 3 दिन का मतलब जो हम गेम्स वेम्स का स्टॉल डालते हैं फेस्टिवल सब में, उसके बारे में भी जो ऑर्गेनाइजर थे ना, जी. उन्होंने ही मुझे पुश किया ओके. कि खाली ओपन माइक से क्या होगा. डू ओपन माइक, स्टैंड अप कॉमेडी एंड स्टफ, बट पुट अप अ गेमिंग स्टॉल आल्सो. सो टिल डेट इरशाद गेम स्टॉल्स जहां भी डालता है तो उसका गेम का जो सामान है ना, द इन्वेस्टमेंट ऑफ द मटेरियल, वो फर्स्ट इवेंट में जिन्होंने मतलब द ऑर्गेनाइजर इन्वेस्टेड इन दैट थिंग, यस. वो अभी तक हम सस्टेन कर रहे हैं. सो उसके बाद next, that's why I always say that I am very lucky regarding people. यस. Like मेरे को चलते फिरते कम्युनिटी में पीपल people आर कमिंग help. इन. I don't. यस. पीपल आर हाँ, कमिंग इन. touch wood. हाँ, हाँ. They're nice to me and I'm यस. okay with it. I'm happy about it. बिल्कुल, बिल्कुल. So that day also the organizer was like, नहीं नहीं प्रिया, ऐसे क्या होगा, ये मत कर, ये कर, ये गेम कर, वो गेम. वो आइडियाज भी उन्होंने दिया. And that's one thing how we monetize. And one more thing about Irshaad is we don't mix art. For example, performing arts. For example, poetry or stand-up never happens together. ओके. अगर पोइट्री है तो पोइट्री होगा, अगर स्टैंड अप है तो स्टैंड अप Yes, होगा. stand-up बहुत rare करते हैं, but जब भी stand-up हो तो we don't mix it together. जी. सो That's the first and a very basic thing I promised myself, हाँ. and I never compromise with that. सो Like I have few rules, हाँ. so I don't compromise. Yeah, say. So I was saying that what Irshad is basically, क्या Irshad is a event curator or it is a community of different like poets, I would say, or artists. मतलब क्या है, आप कैसे इरशाद को डिफाइन करोगे? So Irshaad is a creative, curative and collaborative group. हाँ. So create is the part of poets and everything, Everything. poet music and stuff. Uh, curate is, till now we have curated social ventures के events को. हाँ. Since I have a personal thing for social ventures, so I try and approach them, and now they also approach me कि when you have a, for example, आपका cause है to eradicate food wastage, that's your goal, that's your main purpose. तो आप वो करते करते अगर आपको फंड रेज इवेंट करना है या प्रमोशनल इवेंट करना है, उसका हेडेक आप मत लो, वो हम ले उसका हेडेक हम लेंगे. And we'll try to build in, how we charge is like we try to build in, bring in CSR. If that happens, a part is our fees has been taken care of. हाँ.
and your event gets sponsored. Right. So that's how that curation part happens. And corporate भी as in corporate में हमने है ना आर्टिस्ट भेजे हैं. Like I personally have performed in corporate shows and that's the thing कि corporate में भी क्या होता है ना you need artist. Recreational में you need artist. So we curate that part. Okay. उससे ऊपर हम अभी गए नहीं हैं. Down the line जाए शायद but right now my vision is not that. Okay. And collaboration is like we collaborate for example kite festival में we collaborated with kite festival. Okay. Good. उनका हमने जैसे स्टेज दो स्टेज होते हैं तो स्टेज बी वाज क्यूरेटेड बाय इरशाद Okay. नॉन प्रॉफिट स्टॉल्स वाज क्यूरेटेड बाय इरशाद Okay. सो दैट्स हाउ वी आर ट्राइंग टू स्केल इट अप बट राइट नाउ क्यूरेशन इतना ही है जी. कोलैबोरेशन बाकी वेंचर्स के साथ काम करना तो दैट्स अभी हाउ तक कितने कोलैबोरेशन हैपेंस इवेंट्स आपने मतलब क्यूरेट कर लिए हैं, मतलब इरशाद ने कि वे कितने इवेंट्स किए ओके क्यूरेट लाइक नॉट द एंटायर इवेंट बट पार्ट्स ऑफ इट पार्ट्स ऑफ इट? एक्सक्लूडिंग कोविड को साइड कर देते हैं सो वन टू यू कैन से मोर देन 10 आराम से ग्रेट नंबर. आराम से मोर देन 10 यस. या मतलब होपफुली नेक्स्ट ईयर लाइक 50 टच कर लेंगे बट कंसिडरिंग कोविड एंड कंसिडरिंग माय एक्सपीरियंस 10 इज सो फार तो फॉर श्योर लाइक नेक्स्ट ईयर तक आप और 10 कर लोगे. नहीं आई होप नेक्स्ट ईयर तक 50 कर ले Okay. बिकॉज अब सब खुल रहा है ना हाँ, सब खुल रहा है, सब खुल रहा है. या एंड थैंकफुली अपॉर्चुनिटीज आर Yeah, अपने आप कमिंग come on, yes. सो Okay. won't say So, but how yeah many hopefully corporate 50 how many corporate show if I ask? corporate show was one only Okay. and पता corporate shows का best part क्या होता Hmm. है so you are asked to perform but the crowd there is so much like I was asked to perform for like good half an hour 1 hour thing but I performed only for 10 minutes Oh. ऐसा नहीं था कि they didn't pay me or stuff हाँ हाँ. they did pay me but that's the thing I want to convey to the corporate people कि they don't need artists they need just one person who initiate something and artist वहीं से निकल आएंगे they have जैसे school colleges में होता है so we have this program also for school colleges Okay. we collaborate with colleges अभी वो चालू है we are doing it like went to KC and stuff so वहाँ पे क्या होता है ना you just need to for example मुझे ग्रुप लेके जाने की जरूरत नहीं है I organize something हाँ. and आपके बच्चे आएंगे Okay. हाँ हाँ. जी. that's the thing with corporate also because वो इतना थक जाते हैं ना हाँ हाँ. Yes, right. daily life sales so that happens and 2-3 are more in pipeline is this year के लिए जी. already in talks so yeah Okay. So when and one how was in last Irshad? year Okay, one was in last year. So when and how yeah Irshad started? 2018 में Irshad started? my venture is founded in 2018 21st October Okay. So venture आपका 2018 में. So your journey also started in 2018, right? मतलब या as a poet 2000 as a poet. Like you were saying that you were the assistant secretary of your KC Das College. 2014 Yeah, yeah 2014. So your journey started back from 2014, right? वहाँ तब से आप लिखना स्टार्ट करिए या बनाना स्टार्ट करिए. So it started in nope 2000. so I used to recite वो अपने पढ़ते नहीं थे मैसेजेस में शायरी वायरी so I Yes. used to tell this to my friend circle कि वो लोग ऐसे आते थे प्रिया कुछ सुना हाँ but I never wrote हाँ. so my journey with poetry actually started in 2017 Okay. जी. yeah 2017 like towards the end of 2016 हाँ. and 17 में ज़्यादा शुरू हुई when I told you about the friend Yes. when I get connected with that Yes. person I saw that there is some open mic happening so उसका post है somebody is interested Okay. so मैंने कुछ share किया था and that's how it started तो फुल that's फ्लेजेडली how it started इरशाद स्टार्टेड इन 2018. मतलब yeah जब आपने my पूरा poetry started in 2017 या, आपने मतलब पूरा फुल फ्लेजेडली बोला कि नहीं इरशाद अब बनेगा, मतलब इरशाद अब हाँ बनेगा. ओके. सो व्हेन डिड yeah इरशाद स्टार्टेड गेटिंग इनटू बिजनेसेस? कब मतलब oh इसमें that's वो thankfully बिजनेस वाला एंगल आया इसमें? business wala angle is see I always wanted to have a sustainable thing and I always never wanted to charge the artist that's one of the reason I started Irshaad and
I like to tell it here that आप देखो business is a different thing, job is a different thing, but when you start something, I won't call Irshad a startup, but when you start something यस that is एक कैफे भी होता है ना, जी तो वो कैफे भी कब स्टैंड आउट करता है जब आपने उसमें उसमें कुछ पर्सनल हो. हाँ यस सो फॉर बिजनेसेस लाइक अस, वेंचर्स लाइक अस, इट नीड्स टू बी सम डिफरेंट रीजन, सब एटलीस्ट एक ऐसा रीजन हो जो आपके पैशन को ड्राइव करे. राइट सो माई वन वॉज आई वॉज मिसिंग द पर्सनल यस familiar मतलब पर्सनल जी एनवायरमेंट. सेकेंड वॉज आई नेवर वॉन्ट टू चार्ज द आर्टिस्ट, हाँ मैंने सुना लाइक है मतलब ओपन माइक्स में नहीं. ओपन माइक में चार्ज भी करते हैं मैंने सुना है मुझे नहीं पता आई हैवंट बीन टू एनी No, no, it happens. So earlier I had a problem, but now I understand why they charge. Now I understand why they charge, but still I make sure that open mic नहीं charge करे. जी But I now understand where they are coming from. यस क्योंकि shows कराते expenses आता है. आता है जी बिल्कुल अगर किसी वेंचर देखो बेसिक expenses sound system का. बिल्कुल So Irshad used to have this co-working space in 2019. Yeah, 2019 में we got a co-working space at Rajgarh. ओके ठीक है, तो 2019 का मोस्ट ऑफ द इवेंट्स हमारा वहीं पे हुआ. राजगढ़ में बिकॉज दो माइक नो माइक वाज नीडेड. यस इट यूज्ड टू बी क्लोज बैठक्स एंड स्टफ. यस सो 10-20 लोग आते थे, आराम से बैठ के बोलते थे. एंड देयर वाज दिस कॉमेडी ग्रुप कॉल्ड माइक ड्रॉप फैक्ट्री, तो उनका अपना साउंड सिस्टम होता था. दे यूज्ड टू लेंड अस आल्सो, जी वी यूज्ड टू लेंड देम आवर स्पेस. उनका भी हो जाता हमारा, तो दैट्स हाउ वी यूज्ड टू डू. सो मेरे एक्सपेंसेस बेयर नहीं हो रहे थे, तो इट वाज ओके. But the business part came into picture because when Abhilash joined Irshaad, because you know him, you met him, so I always wanted to do. देखो vision रहता है, हाँ but आपको थोड़ा सा अलग सोचने के लिए एक different रिसोर्सेज भी तो चाहिए चाहिए होता होता है है. या रिसोर्सेज भी Yes, तो yes, चाहिए होता है हाँ. So again जैसे कि आप so far तुमने सुना है कि I have been always supported by, held by people. यस So far no problem in that. हाँ बट उन लोगों से रिसोर्सेज को भी कैसे यूज करूं, क्या मुझे चाहिए. जी बिल्कुल कनेक्शंस है, कनेक्शंस मिले ऑफ कोर्स, वो रहा है, बट उनको कैसे यूज करूं. दैट थिंग इनटू केम इनटू पिक्चर व्हेन ही जॉइंड. जी एंड नाउ आई आल्सो यूज माय ब्रेन, बिकॉज एक थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है. हाँ But I'll give the like 99% credit to Abhilash because he has actually made me think that way. राइट वो structure, he always talks about structure, right? यस यस So that structure is bought by him, and still we have this argument always because he is someone who manages Excel sheet, हाँ हाँ and I am someone who's like daddy pen. जी I'm like I won't change, you won't change, so let's keep it that कीप way. इट दैट वे Yes, जी yeah. तो लाइक इरशाद को आपको मतलब यू वांटेड टू मेक इट अ कम्युनिटी मतलब एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से या वो अभिलाष सर के आने के बाद हुआ लाइक व्हाट यू एज एन आर्टिस्ट वांटेड इरशाद टू बी लाइक इफ आई लाइक कीप असाइड अभिलाष सर's पार्ट अगर आप करती तो इरशाद क्या होता इफ आई आस्क I have this thing, हाँ मेरा डे वन से एक सपना है, हाँ which I'll be sharing this here today with you. So I want the artist of here to be heard, not me. हाँ, मैं जबरदस्ती लोगों को सुना लूंगी, and मेरा कंटेंट रिलेटेबल होता है, लोग सुन लेंगे. हाँ मतलब वो सीधी सादी बातें होती है, लोगों को समझ में आता है. हाँ But as I told you, when my video came out and a lot of people were good, बिल्कुल जिनका वीडियो आउट हुआ था एंड दैट डिडंट बिकम वायरल और उनको वो जस्टिफाइबल व्यूज नहीं मिले. हाँ I know they don't care, but I as a आर्टिस्ट I will say as a artist felt bad. So my thing is to bring one big artist. कोई कॉमेडियन आता है ना, उसका ओपन करता है ना लोकल हाँ आर्टिस्ट. हाँ सो आई वांट 2 आवर का शो जिसमें 1 घंटा तो वो आर्टिस्ट परफॉर्म करे, हाँ पर उसके पहले जो 1 घंटा लोग परफॉर्म करे वो लोकल आर्टिस्ट हो, राइट ओके ताकि नेक्स्ट टाइम उनको देखने के लिए शो में लोग आए.
Right, right, okay, So that is my vision, and that will happen soon because right. we have like started doing that in showcase events. Mhm. Right. But yeah, this is my dream. This is before anybody. Okay. So This is my you dream. actually want to get people into this space of poetry or stand up from your community. मतलब वो इरशाद के होने चाहिए. You want that to happen, right? Yeah, I won't stand up नहीं बोलूँगी because stand up के लिए high time comedy is doing wonderful work. हाँ, I really want. So I have two things in my mind. हाँ, One as a non-Assamese speaker. I'm a Hindi speaker. I'm not an Assamese speaker. बिल्कुल. But when we talk about art, na language. हाँ, For example, I'll tell you, World Poetry Day was started because UN acknowledged this fact that a lot of dialect languages हाँ. dying. Yes. आज अगर if you're Assamese, if you're not speaking Assamese, वो eventually तो मर जाएगा ना. मर जाएगा. बिल्कुल. मैं मारवाड़ी हूँ, अगर मैं मारवाड़ी में बात नहीं करूंगी, eventually मर जाएगा मर ना. जाएगा. So right now it's not even about Assamese or Hindi in this thing. But पता है sadly क्या होता है जब open mic होता है, there is mostly English और हिंदी Yes. और उर्दू में भी. हाँ, हाँ. Assamese लोग नहीं आते इतना. Yes. Okay. एंड माई थिंग इज वे बियॉन्ड एसएमएस. मुझे सिर्फ एसएमएस नहीं चाहिए, मुझे बोरो, खासी, कच्छर, मतलब जितने लैंग्वेजेस है ना, Okay. आई वांट उधर के भी पोर्ट्स. Okay. मतलब you want सो to keep this thing alive. मतलब उनका जो है culture, right? यस That's the driving एंड force you have, right? या Okay. सो you know what, I get passionate about this thing. Music and poetry, हाँ, इनका फ्लो होता है ना, हाँ, बिल्कुल. सो यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑल्सो. भाव Yes. बोलते हैं ना, हाँ, हाँ. भाव समझ में आना चाहिए. भाव समझ में आना चाहिए. यस एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ऑडियंस है. ऑडियंस तो है. Yes. ऑडियंस है. Yes. दैट इरशाद इज सेइंग की ऑडियंस तो है, Have you like ऑर्गेनिक है. okay, yes. So इससे मुझे ये देखने को आया like have you have seen the poetry industry better than me, I would say. So मतलब poetry industry में क्या आपने ये देखा कि poets और poems पहले जो एक rhythm, एक line, एक flow था, मतलब that has changed to spoken words अभी, जो अभी ज्यादा फ्री स्टाइल है और दैट्स मोर कनेक्टेड टू द पीपल, बट वो रिदम फ्लो एंड एवरीथिंग इज लाइक अ बिट मिसिंग, बट वो एक फ्री स्टाइल के फॉर्म में ज्यादा आ गया है अभी, एंड एवरीवन इज राइटिंग जो पहले नहीं था. लाइक इज इट अ डिफरेंस नाउ? नहीं, पहले भी था, हाँ, लोग लिखते थे, हाँ, यस, ठीक है. हाँ, बट अब उनको वो मतलब एक ने शुरू किया तो देर लाइक ओके, ये परफॉर्म किया जा सकता है. राइट, सो स्पोकन वर्ड ज्यादा ट्रेंड में आ गया है. राइट, एंड मुझे पर्सनली कहीं ना कहीं ये लगता है कि स्पोकन वर्ड इतना ट्रेंड में आ गया है कि जो पहले था ना, हाँ, वो उन लोगों को दे आर नॉट कमिंग अप. दे लाइक हमारा ऐसा नहीं है. हाँ, हाँ, दैट आई फील. आई डोंट नो हाउ मच आई एम राइट ऑल्सो, बिकॉज अगेन पोइट्री जैसी चीजें बहुत पर्सनल होती है. यस, राइट, बट मैंने ना, मतलब आई कैन प्राउडली से दैट एटलीस्ट इन गुवाहाटी आई हैव सीन द मैक्सिमम पीपल परफॉर्मिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. यस, मैक्सिमम पीपल. कितने तो ऐसे आके बोलते हैं शो में कि व्हेन वी परफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम मुनमुन वाज हियर, व्हेन वी परफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम मुनमुन इरशाद वाज देयर, इरशाद के शो. सो आई हैव सीन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल परफॉर्मिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. राइट, एंड आई हैव सीन दिस लिटरेचर वाला पार्ट आल्सो, द स्पोकन वाला पार्ट आल्सो, यस, दैट कवाली वाला पार्ट आल्सो, दैट वो एक दो का रिदम होता है वो वाला पार्ट आल्सो. okay. So you as a person, what you like the spoken wala part or the rhythm wala part, the main poetry that we all I, know as a most. person, no, I'll tell you, I, as a person, love people expressing. I really don't have any personal thing about that. I love listening. I really appreciate when people have the courage to express. Right. And that's why I don't like venues or people who talk when somebody's performing. Okay. So I got a very silly question. Like Okay. when you said poetry is very personal, yes, that's true. Poetry is very personal because it's somebody's art. तो मतलब एक ऐसा मतलब ऑरा एक है ना, एक ऐसा नोशन बना हुआ है कि टू बी अ कवि
To be a Hmm. kavi, you'll have to become a दिल फेक आशिक, एक दिल टूटा Okay. हुआ आशिक or something like that. मतलब somewhere you need some दर्द. Like you being a event curator, you being a artist yourself, what do you think? Like आपको तो ये पता है ना, ये वाला notion है, बाजार में है. हाँ हाँ, I have a very length में discussion about this thing because Okay. when this discussion happened was when I watched Bohemian Rhapsody. हाँ हाँ. I am like, dude, this was so good but so depressing. जी. मैं I was so in doubt कि क्या एक आर्टिस्ट इतना दुखी रहता है कि तभी वो आर्ट निकाल सकता है क्या? हाँ, like is it something like that? This Yeah, no, it's not. I don't create art when I'm sad. And my father once told me that when you are upset, you should not. Um, you write, but you should not make it a thing because आप उसमें उलझ जाते हो. हाँ. And that's his personal notion. Notion. But ट्रेंड में होता है ना चीजें. जी. तो ट्रेंड में हो रही चीजें जरूरी थोड़ी है सच है. बिल्कुल. So कितनी बार क्या होता है ना, somebody believe in this thing, few people believe, few Yes. people don't, but majority of people just go with the flow. Flow. Right. So इस वजह से नोशन बन गया. I don't think so. If you talk to an artist, they will not say this. Mostly will not say this. They will, those the people who will be saying this are those um, जिनको है ना क्या बोलते हैं ग्लैमराइज करना होता है चीजों को कि Right. मैं दर्द में हूँ. And I hate those people, those who glamorize these things. Na, I don't like these people. Okay. So, yeah, But like what do you think? No, no, no. Before you, I just want you to tell me. What do you think? Do you believe in this notion? I don't believe in this notion, but I have Okay. seen, but like how old I am, how much I have seen the world or my friends around. ये होता है when there is something, going on, when there is something going on, तो कुछ हो जाता है उनके साथ. Some life events happened and they become Right. poets. And they become poets. तो अरे कहीं ना ओके. कहीं I सी सी relate to the क्या होता है notion. ना. नो नो आई टेल यू. तो आई ऑल्सो मैंने ना वंस आई वाज परफॉर्मिंग इन आईआईटी इनका ना स्लैम पोएट्री कंपटीशन चल रहा था. सो देयर वाज वन poet friend of mine. He was like shit ये फिर प्यार के बारे में बोलेगा. I don't understand why don't people get over it. So I just told him this thing कि क्या होता है ना people like sometimes art starts. Right. Thankfully मेरी साइड में ऐसा नहीं होता कि मैंने प्यार में पढ़ के लिखना शुरू किया था. But a lot of people starts writing because of that reason. So तुम्हारे लिए क्लीशे हो सकता है. Yes. But cliche is also an experience for someone ना. But तुम अभी 20 साल नहीं तुम अभी 20 साल के हो तुम जो अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो when I was 20 I experienced that thing ना. right. So if you are experiencing that and you are putting it out and if I say कि यार क्या क्लीशे बोल रहा है ये लोग समझ ही नहीं रहे कि what they will see after 2-3 years ये सब कुछ नहीं होता है these are that so that is also wrong ना. Yes, true. Using your experience to justify the person is not doing the right. So ये तो वैसी बात हो गई ना कि तुम्हारा प्यार प्यार मेरा प्यार नहीं. तो Right. ऐसे ही थोड़ा But होता है. how Yeah. beautiful thing that is, right? Like you being a kavi yourself, you being a poet yourself. What do you think? How beautiful it is to express your love? Like you are not a poet, and आप प्यार में हो or something like not प्यार like keep प्यार aside. Anything. Anything. आप Let's किसी keep चीज में हो. let's think this thing. What keep प्यार aside self love. Yeah, self love. Yeah, आप किसी Yeah. भी चीज में हो, like you are into the हाँ. nadi with your nauka and Hmm. you express that thing with poem. How beautiful that thing is. Like आप एक ऐसे phase में हो जाते हो. So like have you been into that? Like you also started because of that? मतलब No, that no. was I a started phase. my first. No, no. My first piece was about a girl. The one which I recited to my father. Okay. That was about a girl, and that was an observation. Okay. That was few things relatable थी, but few things with observation. हाँ, so that's the basic question I was actually frame I would frame the question हाँ. to. मतलब आप ऐसा कुछ देखते हो जो आप मतलब वर्ड्स में एक्सप्रेस करना चाहते हो या you want to do something or you want to express somebody, मतलब आप किसी को ऐसा बताना चाहते हो, so that's the thing, like how you मुझे start. मेटाफोर के साथ खेलना पसंद है. Okay. फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम
So what is if someone is like that ice cream to me in my life, Right. so rather than naming that person or naming their expression, I'll like to talk about ice cream. Mhm. When I'm like, well, mostly when girls, I will say, Mhm. and whenever somebody is cranky, Right. having a sweet and that too cold Yes. makes you happy. Right. वो डोपामिन जो चीज़ है, ये शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस, Mhm. तो हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई वैसा होता है. Okay. Or sometimes it's you also, you for yourself, Yes. like having a self talk and you're like good to go. Yeah. So I like to do that more as an artist. Mhm. And मैं सीधी बातें करती हूँ, Mhm. मतलब I sometimes relate uh, basic things to metaphors, or sometimes I'm like, this is me, Yes. this is no filter me. And if you listen to my pieces ना, उसमें कोई वैसा ढांचा नहीं होता है. Mhm. एंड अर्लियर आई यूज टू फील कॉन्शियस कि यार उसका ऐसा है, उसका ऐसा है, उसका ऐसा, मेरा ऐसा क्यों नहीं है. बिल्कुल. बट विथ टाइम Mhm. आई हैव रियलाइज्ड कि मेरा ऐसा है क्योंकि मैं ऐसा है. Right. Yes. एंड दैट्स हाउ आई अंडरस्टैंड माई सेल्फ इन अ बेटर वे. Okay. So how big is Irshad, if I ask you now? Okay, as I told you, na, a lot of things started before Irshaad, हाँ. in between Irshaad, हाँ. uh, but all those things are in Irshaad, Okay. आप part of numbers में Irshaad. बता दो. आप numbers में बता दो. Like number of So people. let's talk let's talk in WhatsApp का strength. So as a poet, we have 200 plus in our WhatsApp group, Okay. in our WhatsApp touch. Instagram हमने last year ही शुरू किया था, तो we crossed 400. Our basic insight, I will tell, without boosting organic insight. For example, for the last event itself was 800 plus, 800 reach, and 70% were non-followers. Okay. Yeah, and that's like I was showing it to people and like देखो यार non followers है, Non-followers. and on yeah, non followers है, and at Facebook it is 1,000 plus. हाँ हाँ. And I'll tell you, when we, for example, the last event we did was the Holi ka weekend, na? हाँ. It Yes. was a Holi weekend and a lot of things were happening in town. Right. Still, we sold around 28 to 30 tickets, Right. and footfall was 50 as a guest and stuff. Footfall was 50, and in that only 13 people were poets. A lot of people messaged and stuff कि नहीं आ पाए. So हमारे events अगर हम like if we promote it well, so 100 का strength तो हम ऐसे pull कर लेते हैं. आराम से. जी. Yeah, 100 तो it comes, Mhm. and yeah, it's growing. Yeah. So any event story, like favorite event story in short you want to say? Yeah. The last one I'll tell you. It's like funny नहीं है, but it's very beautiful. हाँ. So, since Abhilash has a lot of commitment, so he was not able to give, like he did the creative wala part, but on ground thing के लिए he was not available. हाँ. So there I'll tell you the other why I say कि इरशाद में सब है. हाँ. So whenever Irshaad does something ना, हाँ. there are groups I will mention, Mijaj, Alfaz, हाँ. High Time Comedy. हाँ. So these people help me out. हाँ. There's one artist called Shubham Dey. He's a caricature artist. So how the event happened कि अल्फाज का जो फाउंडर, वन ऑफ द फाउंडर, ही वाज लाइक दी क्या करना है बोलो, लाइक इफ आई पुट अप अ स्टोरी आई नीड हेल्प, या मैं ग्रुप में भी मैसेज करती हूँ दिस इवेंट इज कमिंग आई नीड हेल्प, मेरे को ऐसे 4-5 लोग बच जाते हैं. दैट्स हाउ माय टीम गेट्स फॉर्म्ड. सो इज लाइक हाँ दीदी करते हैं, एंड दे डिडंट आस्क एनी मॉनेटरी बेनिफिट फ्रॉम मी. सो ही मैनेज द, ही डिड द प्रिंटिंग वाला थिंग, हमारे साथ जाकर के पोस्टर्स लगाना पूरे टाउन में जहाँ जहाँ हमने लगाया, पोस्टर्स लगाना से लेकर के दी इवेंट को ऐसे मत करो, ऐसे करो, ये ऐड करो, वो ऐड करो. Idea was mine, but inputs is always required. Right. So he was the management team for me. He was the management leader for me. Yes. The other Shubham, the caricature artist, he was the registration desk का बंदा for me. कि दी ऐसे करना है, वैसे करना है. There was this girl called Ria. She was the PR for us. मतलब she was covering the social media का content for us. Then there was Hype Time Comedy का कुणाल. He managed this like किसको बुलाना है, क्या करना है, रजिस्ट्रेशन डेस्क में किसी और की जरूरत है.
That's how Irshad happens always, and that's why I always say कि community है हाँ हमारे पास. हाँ. Because for example मैंने community बोल दिया, but event कराना हो तो I am like कहाँ से कराऊँ कहाँ कैसे से कराऊँ. करें? Of course I'm always nervous, but it happens. So it's a win-win situation Right. always. So that's the most recent and the most touching part for me कि it happens मतलब हो जाता है मैनेज लास्ट तक. And for the thing कि I was expecting कि tickets और sale हो जाए. हाँ. Even the venue partner, I would like to mention that the first time we did the thing in the venue, the founder was so supportive last year when we did the Untitled 1.0. We just experimented with ticket. Yes. That time it was 60 plus tickets sold. Okay. तो the first time पैसे दे के लोग देखने आते हैं, तो आते ऐसा नहीं है कि आर्ट देखने लोग नहीं नहीं आते, आते हैं बिल्कुल. आते हैं. So that's the thing. That's the, like everybody is supportive, and that makes me happy. So how to get into your community of Irshad? Like if someone is listening to हाँ. this, तो उनको अगर इरशाद में आना है, they want to showcase their poetry, they want to showcase their talent, their art, like how they can approach you or how they can get into you. One is simple as that. Connect us on sorry Instagram Instagram, ठीक है. or Facebook, हम्म. or you can mail us also. We have a mail ID also. If you go check our post, any of the post you will find one number, one mail ID. हाँ. उससे भी आप connect कर सकते हो. And if you want to join the team, you can also join the team. But उसके लिए एक basic requirement है. We don't want your CV. We just want to know what you will bring on the table. Okay. हाँ. मतलब what is your Yes. passion? Yes. Because इरशाद का literal meaning direction देना होता है. Yes. So ऐसा नहीं कि हम ही direction देंगे. हम्म. If you have something, bring it on, and that will be your thing. Yes. You leading it out, Okay. or you just want to be as an audience. Then also connect with us because we have this group for audience as well. Okay. Okay. So, are you thinking of getting into this publication industry soon, sooner or later? मतलब आप अपने publications निकालोगे, इरशाद publication, something like that, or you are better being a community of artists? No, 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 no. Publication, yes, but 5 years तक तो मैं नहीं सोच रही. ठीक है. Okay. There are a few things in the line, and I really want to want the poets जो हमारे group में community में है. I want them to publish, and Irshad will love to help because we have wise and monks जैसे लोग in our with us. उनके साथ भी हम collaboration में events कराते हैं. So that is a publication house. We will definitely help to get them published. But Irshad 5 years तक नहीं publication खोलने का सोच रहा. But yeah, it is hopefully it is in the future. Okay. So, if I ask for like more with the business perspective, uh, what do you think? How big is ये जो कवि वाला इंडस्ट्री है हमारे देश में? Like poem and poetry, like poets and poetry. How big this industry is in our nation? If I ask, or in our demographic specifically, अगर मैं पूछूं तो आप नेशन बताओ फिर डेमोग्राफिक बताओ अगर आप कंपेयर सी नेशन से देखो, अगर आप मेजर सिटीज को पकड़ोगे, कोलकाता, दिल्ली, बैंगलोर, पुणे, मुंबई, you know the facts राइट. that it is It is there. big, yes. Yeah, it is there. So क्या हो गया ना, जैसे I as a poet I started कि बाकी I am trying to make sure that other poets also get the same exposure. That's why I started with Irshaad. But जो big names है, they came under the banner and they are doing it. They are doing it like as an individual. जैसे मैं बोल रही हूँ कि मुनमुन को भी मुझे ब्रांड बनाना है and इरशाद को भी ब्रांड बनाना है. So जो बड़े ब्रांड्स है, इरशाद जैसे बड़े ब्रांड्स है, मुझे वो भी बनाना है और उस ब्रांड के अंदर जो आर्टिस्ट है मुझे वो भी बनना है. बनना है. Because there's a thing, there's a huge market for it. It is there यार. पॉइंट ये है कि आप कितने अच्छे और कितने एंगेज करते हो. राइट. क्योंकि आज आप कहीं भी जाओ ना, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में जाओ या पॉलिटिकल गैदरिंग में जाओ, किसी भी चीज में जाओ, द वर्ड्स आर द ड्राइविंग फोर्स. यस, ट्रू. आज फॉर एग्जाम्पल 9 to 5 का जॉब कर रहे हो बैंक में, हाँ. ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड
If you meet anybody working 9 to 5, they're frustrated. Yes, true. Sadly, like 10% लोग शायद नहीं होंगे, they're हाँ, mostly frustrated. yes, So they look forward to these kind of things. right, They also create something that motivate. That's why it's a huge thing. yes, So it has a big. I can't say the percentage. In Northeast, it is growing, but in yes. other part, it is there. It is there. Okay. It is there. Northeast में grow कर रहे हैं. Time लगेगा, and hopefully Irshad will be that growth factor. Right. Hopefully, Yeah. Or be the yeah, part of that growth, actually. yeah. I just hope so. Yeah. तो अगर मैं अभी और नंबर्स में जाऊं, लाइक नॉट नंबर्स आई से, Hmm. आपने तो ये पोएम वाला मतलब ये जो इंडस्ट्री आपने काफी क्लोज से देखा है. सो आई हैव रेड एन आर्टिकल लाइक दिस poet like poets are dying, poems are dying, like do you like what you have to comment, what you have to comment on this? I already did say you ना क्या हो रहा है कि जैसे जब चीजें जो ट्रेंड में होती है वो ज्यादा हाईलाइट होती है ना तो जो लिटरेचर वाली चीजें होती है ना वो थोड़ा कम हो जाती है तो लोग आना बंद कर देते हैं उनके पास ऑडियंस जाना कम कर देते Right. हैं तो इट सैडली इट्स समवेयर ट्रू ओनली Okay. आज मैं इतना ट्राई करती हूँ कि एसएमएस पोएट आए Hmm. सो दैट्स अ वेरी टफ थिंग फॉर मी सो नाउ आई एम प्लानिंग टू हैव एन एसएमएस ओपन माइक दो मुझे ज्यादा समझ में नहीं आएगा but what I'm trying what is my this year का project is to at least have 10 different languages का open mic Okay, so because anybody north who's east जैसी listening to this, जगह हाँ anybody who's listening yeah to this, please please, we want please SMS please poets. Yes, we want SMS poets. yes SMS Boro that day at World Poetry Day there was an event at Guwahati Press Club by Betty Karan if I'm not pronouncing it wrong I'm so sorry Yeah. so there was this girl she performed in Boro language एंड आई वाज सो टच्ड मेरे को लैंग्वेज नहीं समझ में आई बट उसका अगेन जो भाव था ना वो कनेक्ट किया मुझे Right. सो आई वांट दैट काइंड ऑफ पीपल टू कम अप पीपल थिंक कि हम लोग ट्रेंड नहीं आई रियली वांट Hmm. लैंग्वेजेस एक्चुअली मर रहे हैं Right. या दैट्स आई अग्री टू दैट थिंग Okay. आई होप टू चेंज दैट बट आई अग्री टू दैट Okay. So, like as we are asking or talking about this business thing, what do you think for a like with a business perspective, from a business perspective, to get into this community-based business model, how important this is? किसी भी business के लिए, इट अगर इज इट इज हाउ एक्सप्लेन करना मेरे लिए राइट नाउ थोड़ा टफ होगा hmm, बट फॉर एग्जांपल आई से द पॉडकास्ट इंडस्ट्री राइट नाउ hmm, इट्स ग्रोइंग yes, a lot of people tell me also कि आप YouTube पे कंटेंट डालो अभी नहीं बट इवेंचुअली एक हिट कर गया तो इट विल हिट it will hit. why because right now people are consuming Hmm, a lot of content right, people are actually loving to listen to experiences stories because क्या है ना अभी innovative age चल रहा है right, a lot of people are trying to do something of their own right. everybody is मतलब seeking inspiration Hmm, motivation hmm, वो कम्युनिटी से ही आएगा ना when right, one is talking to other right. listening to other Yes. understanding If I'm talking to so you, I'm getting inspired. Yes. I'm getting the same thing at Yes. honestly speaking मतलब listening to you and your questions are making me think Hmm. Think and rethink. Yes. yeah that's the thing ना that's why community is important and मेरी जैसे मेरी basic इस इरशाद के लिए you know I'm surviving because of this community Hmm. True. nobody is actually help those who are helping me they're not seeking any monetary benefit they're not even asking for it Hmm. they're like दीदी आप कर लो हाँ हम हैं आप कर लो हम हैं हाँ 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 अच्छा अपना ब्रांड है फिर भी मेरे ब्रांड को हेल्प करना इज अ it's a yes thing it's a big yes deal it's a big so deal that's why community building is very important okay so yeah as the time is concerned so like I won't take this हाँ too हाँ far so yeah so we have a rapid fire session as I told you okay so let's get okay I'm started with nervous that no it's मेरे not लाइफ का आई गेस पहला रैपिड फायर आई एम वेरी नर्वस No, no. Rapid fire, it's not that difficult. Like, I'll be shooting some words to you, and whatever the ओके first thing comes into your brain, you can explain or you can leave, and you just tell me that first thing that comes in your brain. Okay? So, श्योर let's get ओके started. So, the first ओके word, poem.
पोयम, Yes. एक्सप्रेशन, Okay. हास्य कविता अगर मैं बोलूं. हास्य कविता, माई सेल्फ. Okay. I फिर can explain that thing yes, 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 actually. yes. So if not now, but if earlier I used to perform ना, Hmm. so लोग mic drop करते हैं ना after this thing कि mic drop होते हैं. So when I'm on stage, no matter how serious I'm talking, I make sure that I'm that हास्य का पात्र. Aha. It happens. It's a very natural thing in my mic गिर जाना. Like when I perform in other people, so it's like it's Priya, it will happen. It's Munmun, it will happen. Happens. So mic गिर जाना या when I introduce myself and the things, content serious होगा, but आगे पीछे की चीजें में हो जाता है. Yeah. So that's why हास्य is me. Okay. Poet. Poet Manisha Srivastav. Okay. She's my favorite. Okay. Please, everybody search Manisha Srivastav, IIT or Virsa. You will find her beautiful piece called. All are beautiful, but her Abhimanyu. And I'll just share one line ki. There's one very beautiful one कि हमने रसखान के दोहों में कान्हा को पलते देखा है. तुमने देखा ये कुरुक्षेत्र और भाई भाई लड़ बैठे. हमने एक धागे के खातिर युद्धों को टलते देखा है. हमने रसखान के दोहों में कान्हा को पलते देखा है. So guys, please check her out. She's amazing. These lines are only giving me goosebumps. पूरा सुनने से Yeah. तो मजा आ जाता है मतलब like Yes. literally. Okay. Love. Personal. Okay. Expression. Yourself. Okay. Being yourself. Right. Money. Important. Okay. Community. Survival tool. Okay. Profession. Passion. Irshaad. Life. Okay. So the final one. Okay. If I say Okay. Munmun Tiwari, one word. It's a difficult one. Approachable. Yeah, very true. Yes. I'm sorry. So yeah, thank you so much. Like this was it. And yeah, so what do you think, like coming back to all this question thing, like what is your vision with Irshad? Like what do you want Irshad to be in very optimistic manner? और आपके 5 साल डाउन द लाइन क्या प्लान्स है या 1 साल डाउन द लाइन क्या प्लान है कोई भी एक 5 साल या 1 साल ऑप्टिमिस्टिक व्यू I, as I told you na that one show and हाँ opening the with the thing yes that's the हाँ thing yes that's the most closest plan. I have few more that the college open mics things, हाँ building clubs in schools. हाँ और being Um, the part of every poetry club. yeah, thankfully I'm part of it all of Yes, so far. And one more is like bringing this culture of cafes paying us or not charging us. yes. This thing कि बाहर है ये कल्चर कि I won't say all the cafes can pay us, but so far मैंने जितनी भी जगहों पे shows कराए हैं, I have never paid. They have been nice to me. So bringing that culture. Okay, That was not only my vision, but मैं जितने भी ऑर्गेनाइजर से कनेक्टेड हुई हूँ, everybody is trying to do that. okay, So with poetry also I want to do that. Bring this culture of getting paid or at least not paying. okay. Right. So, any message to the audience who have listened to this far? कोई message या कोई ऐसा चीज जो आपसे वो ले जा सके, like what you have learned being in community or being in people. Any three I'll things two like thing. okay, okay, two I'll, things. I'll say just two thing. Yeah. See when I started Irshaad, and if you are seeing this in this year or coming 5 years and जब तभी भी आप देख रहे हो, I don't know how much because we'll be growing. Yes. ये नहीं है कि हम कहीं मिलेंगे रुके हुए, मतलब वी आर ग्रोइंग. बट किस ग्रोथ पे आप मुझे देख रहे हो मुझे नहीं पता. हाँ.
मे बी हम बहुत बड़े हो गए और तब आप उनको देख रहे हो और यू आर लाइक ओके ऐसी जर्नी शुरू थी. आई नेवर थॉट यहाँ तक आएगा. हाँ. I have always followed the instinct and I've always tried to just grab the opportunity. Right. So अगर मन में कुछ है, Hmm. कुछ भी, I'm not saying about a venture or thing, about personal things also. Yes. If your instinct telling you let's go for it, please go for it. बाकी गिरोगे पड़ोगे सीख लोगे. It's okay. And always believe in yourself because you're the first and the only person who will believe in yourself throughout your life. बाकी टाइम एंड अगेन लोग आएंगे जाएंगे. Yeah. एंड आई जस्ट वांट टू से दिस आई से फेमस शायरी ऑफ मी बिकॉज किसी ने भी मुझे परफॉर्म करते हुए देखा है. दे हैव सीन दे हैव हर्ड दिस थिंग. आई जस्ट वांट यू टू से इरशाद एंड आई विल बी सेइंग द प्लीज. Irshad. थैंक यू. सेल्फ लव पे है कि मत हो इतना मशरूफ मुझसे नफरत करने में. मत हो इतना मशरूफ मुझसे नफरत करने में. बिता लो कुछ पल तो यारो खुद से मोहब्बत करने में. तेरी नफरत का मुझ पर कोई असर ना पड़ना है लेकिन तेरी मोहब्बत का तुझ पर बेशुमार खुमार चढ़ना है. बेशुमार खुमार चढ़ना है. थैंक यू सो Nice, मच. दैट वाज nice, इट. nice, nice, nice. It was nice actually. So the message that you should take from here is like just go for it. No गो matter फॉर इट. what, like if you are getting that मैं instinct, पहुंची हूँ. हाँ, या just go for it. मैं पहुंची हूँ. बिल्कुल. या गो फॉर इट. अगर कोई लाइक मुझे 1,000 लोग circumstances, तो जानते ही है. हाँ हाँ बिल्कुल. अभी शायद उस सो 1000 में से और 10 जुड़ जाएंगे नए. मेरे नहीं. मेरे में. ओ नहीं नहीं एक्चुअली नहीं नहीं लेट्स लेट्स कैलकुलेट दिस वे. हाँ नंबर्स की बात करें तो 2.4 मिलियन लोगों ने देखा है. तो कितने ने अगर रिपीट भी देखा तो 1 मिलियन लोगों ने तो देखा ही है ना. हाँ न्यू. तो मुझे उतने लोगों ने देखा है. हाँ. तो लोग भी कर लेगा. तुम लोग भी कर लेगा. जस्ट जस्ट राइट. जस्ट मतलब यस. गो फॉर इट. जस्ट गो फॉर इट. यस. अगर तुम्हें कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसा नहीं रोक रहा है, अगर इंस्टिंक्ट है तो जाओ. हाँ Yes. जाओ. Okay. So we can't end this session without your poetry. Like you did one. You did one. But या I want your proper poetry for this session to end with. So please, ओके. Munmunji, like या या yeah, if you can. आई हैव वन. Okay. या just to end this thing in a appropriate Yeah. ending देने के लिए Yeah. this one is about life. Okay. जिंदगी की कलम की स्याही है हम. जिंदगी की कलम की स्याही है हम. चाहे या ना चाहे खत्म तो हो रहे हैं हम. अब दास्तान बनना है या अनसुनी कहानी. दास्तान बनना है या अनसुनी कहानी. चलो चलो बस इतना तय करते हैं हम. थैंक यू सो मच. Wow, great. So, yeah, like, see how beautifully sitting in my home, I am listening to someone who has crossed 4 million views. So, 2.4 नहीं oh, नहीं ज्यादा हो गया. okay, 2.4. 2.4 million views. Yeah, 4 million भी हो गए होंगे शायद अभी तक. Okay, so that's great. होपफुली. Thank you so much for coming to our show, and thank you so much for थैंक यू सो मच. giving time to me and talking to me. You are a great person to talk to. Like it was nice. थैंक यू सो मच. I got to know about Irshad a bit more and better. So anybody who is listening to this or wants to be a part of Irshad, just go into their Instagram account and just message कर दो और एक हाँ हाँ mail कर दो. प्लीज. And yeah, Munmun ji is very much approachable. आप जाके बस आया करो आया. and yeah, she will get you there. Yeah. Thank you so much for थैंक यू सो coming मच. and yeah, thank you so much. Thank you so much, Sudeep. I wish you really all the best for your personal as well as this thing. Right. You also go for it. Yeah, I'm going for it. Yeah. Thank Yeah. you so much. Thank you so much. Bye bye.